a slight change in the interval minus pi to plus pi. Okay, so we have seen in the previous lectures Fourier series in 0 to 2 pi. So now we are going to study how to write the Fourier series in the interval minus pi to plus pi. Same procedure, everything is same. A slight change, maybe if you don't remember this concept, you can directly calculate A0, AN and BN. But before calculating, you have some concepts of even and odd function. You have done what is an even function, what is an odd function. So what is an even function? If we replace, a function is said to be an even function if f of minus x is equal to f of x. If we replace x by minus x in the given interval, if we get the same function f of x, we say that the function is an even function. Okay. For example, when you have cos function, cos of minus theta is equal to cos theta. So cos theta is an even function. Similarly, the function x square. If I replace x by minus x, still the answer will be x square only. Okay. So that is why the function is said to be even if f of minus x is equal to f of x. If we replace x by minus x and if we get the same function f of x, then we say that the function is even. So for example, we have cos, sec, x square are the even function. Now when I represent graphically, an even function is symmetric about the y-axis. An even function is symmetric about the y-axis. For example, you want to draw y is equal to x square. So what is the curve y is equal to x square? We know it is a parabola symmetric about the positive y-axis. So we can say that when you have y is equal to x square, you have a parabola symmetric about the positive y-axis. And this is an even function because when I replace x by minus x, we will get the same function x square. That is why we say that an even function is symmetric about the y-axis. An even function is symmetric about the y-axis. Symmetric मतलब दोनों side उसके same रहेगा. Y-axis के left hand side and right hand side, the curve will be same. Similarly, odd function. Function is said to be, sorry, this is odd actually, not even. Again, I made a mistake. A function is said to be odd if f of minus x is equal to f of minus f of x. It is said to be odd function f of x is said to be odd if f of minus x is equal to minus f of x. So if I replace x by minus x, we get the function as minus f of x, like sine of minus theta. Sine of minus theta is equal to minus sine theta. So we say that this function, sine function, is an odd function. A function is said to be odd if f of minus x is equal to minus f of x. And the examples are sine x, cosec x, x cube, etc. are odd function. And an odd function can be represented graphically as these odd functions will be symmetric about the origin. The odd functions are symmetric about the origin. For example, suppose you have y is equal to x. What is x? X is an odd function. If I replace x by minus x, we will get the answer as minus x. So when we draw the line y is equal to x, it passes through the origin. So we have that and odd functions are symmetric about the origin. Not a particular axis, it is symmetric about the origin. Okay, so even function में x को minus x, odd function में भी x को minus x put करना है. See whether you get the same function or minus of that function. Okay, so those two definitions we have to remember. Then we have some properties of even and odd function. Why we are doing is because we were using these concepts in solving the Fourier series. The Fourier series becomes a little bit easy compared when we apply the properties of even and odd function. Okay, that is why I'm explaining what is even function and odd function. तो पहले हमने definition किया even and odd function का. Now properties.
The sum or difference of two or more even function is an even function. अगर हम दो फंक्शन का सम निकालें, दो इवन फंक्शन का सम निकालेंगे या डिफरेंस निकालेंगे, the answer will also be an even function. Similarly, the sum or difference of two or more odd function is also an odd function. Then we have product. अगर product of two even function लिया, for example, now even function is x square into x square अगर लिया, so I will get the answer as x raised to 4. X raised to 4 is also an even function. So product of two even function is even. Product of two odd function, अगर मैंने एक function लिया x, दूसरा odd function लिया x cube, तो x into x cube is x raised to 4. X raised to 4 is an even function. So product of two odd function is even, and product of an even and odd function is an odd function. Okay, so when we multiply two even function, the answer is an even function. Remember this concept. Product of two even function is even, product of two odd function is also even, and product of an even function and odd function is odd. So I'll just represent this with the help of a table. So even into even is even into odd is odd into even is odd, and odd into odd is even. If you forget this, you can just take any example. अगर इसको x लिया, इसको भी x लिया, तो x into x is x square. X square is an even function. इसको x square लिया, इसको x लिया, तो x square into x is x cube. X cube is an odd function. Okay, so product of two even function is even. Product of two odd function is also even. Other two are odd functions. So product of two even functions or product of two odd functions, those functions are even functions, and product of even into odd or odd into even will be an odd function. Okay. Now we have these two properties of an even function. We had this definite integral properties. When f of x is even, minus a to plus a f of x dx is twice 0 to a if this function is even, and the value of this integral is 0 if f of x is an odd function. Okay, this we have done already in 12, the properties of a definite integral. Now, why we are going to make use of this? Because the interval is given as minus pi to plus pi. So suppose the function is an odd function, पूरा ये जो value है इसकी 0 हो जाएगी. Okay, so that is why we are making use of this definite integral. अगर minus a to plus a, if this function is an even function, इसको हम लिख सकते हैं 2 times 0 to a. सेम फंक्शन ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, खाली ये जो इंटेग्रल लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है दैट विल बिकम 2 times, और अगर ये फंक्शन ऑड है तो इसका आंसर 0 आ जाता है. दिस यू हैव ऑलरेडी डन इन 12, इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट. प्रॉपर्टीज ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रल. ठीक है, तो ये हमको याद रखना है. अगर माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो 2 times हो जाता है. कब होता है? जब फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, और इसका आंसर 0 होता है जब फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन. ओके. Okay, now we will derive what will happen to our Fourier series when we write the integral from minus pi to plus pi. So now we have Fourier series in minus pi to plus pi. Now what is the length of this interval? How do you calculate the length of the interval? Minus pi से लेके pi तक जाना है, तो what will be the total length? नॉर्मली हम क्या करते हैं लेंथ निकालने के लिए, अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट. ओके, तो यहाँ पे पाई है माइनस ऑफ माइनस पाई, तो ये हो जाता है पाई प्लस पाई दैट इज इक्वल टू 2 पाई. तो लेंथ ऑफ द इंटरवल, प्रीवियस प्रॉब्लम्स में भी लेंथ ऑफ द इंटरवल वाज 2 पाई, हियर आल्सो द लेंथ ऑफ द इंटरवल इज 2 पाई. तो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे a0 an और bn का वगैरह, we will have 1 by pi outside. Okay, since the length of the interval is 2 pi, so this pi will come over here. Depending upon 2 into जो number आता है वो number यहाँ पे आ जाता है. Now the interval, the limits are given as minus pi to plus pi. बाकी सब formula change, सब same है. जो भी हमने किया था previous lectures में वैसे ही same formula है. Minus pi to plus pi fx dx is defined as a0. 1 by pi minus pi to plus pi fx cos nx dx is an. Similarly, this is equal to bn. Okay, so these three we have already done the same formula. Now हमें एक change यहाँ पे क्या करना है?
suppose the function f of x is an even function. Okay, suppose I take, now this is the property, suppose f of x is even. Okay, so what will happen to a0? तो a0 का फॉर्मूला है 1 by pi इंटीग्रल माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स डी एक्स. मतलब f of x इज एन इवन फंक्शन, और अगर इवन फंक्शन है तो प्रॉपर्टी होता है 2 times 0 to pi. So if the function is an even, I can write a0 as 2 by pi integral 0 to pi fx dx. Similarly, an. Now, an में क्या होता है? fx होता है. an में क्या होता है? fx और cos nx. We have taken fx to be an even function. Cos is what type of function? Cos function कौन सा function है? Even है कि odd है? Just tell me what is the cos function, even है या odd है? Even function. Why? Because cos of minus theta is equal to cos theta. ठीक है, ये even है, ये even है. f of x is even, cos nx is even. So what is the product of two even function? Product of two even function is also an even function. तो फिर से हम इसमें even function का property use करेंगे. तो I will get the answer as minus pi to plus pi हो जाएगा 2 times 0 to pi fx into cos nx dx. ठीक है, f of x को हमने even लिया है. Cos we know it is an even function. Product of two even function is an even function. So we will get minus pi to plus pi will become 2 times 0 to pi. ये एक हो गया. Now what about bn? bn में भी fx is an even function. Sin is an odd function. Sin is an odd function. fx is even, sin is an odd function. Product of even and odd will give you the answer as odd function. And for the odd function, we know that the value is equal to 0. So bn is equal to 0 when the function is an even function. तो अगर फंक्शन डिफाइंड किया है माइनस पाई टू प्लस पाई में, तो चेक करना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है. अगर फंक्शन इवन है तो bn will automatically become 0. We need not calculate bn. Okay, we can write directly, if it is an even function, we can write bn equal to 0. We have to calculate only a0 and an. तो a0 का हो जाएगा 2 by pi integral 0 to pi fx dx, और an हो जाएगा 2 by pi integral 0 to pi fx cos nx dx. ठीक है, तो हमें कब चेक करना है? Whenever the Fourier series function is defined in minus pi to plus pi. 0 to 2 pi में नहीं चेक करना है. ये जो प्रॉपर्टी है ये खाली minus pi to plus pi के लिए है. Okay, so whenever the function is defined in minus pi to plus pi, then we can check whether the function is an even or odd. अगर function even है तो bn ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. और a0 और an हमको निकालना है बाय यूजिंग दीज टू फॉर्मूला. अगर सपोज f of x ऑड है तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया. अगर f of x इवन है तो a0 ये हो जाता है, an ये हो जाता है, और bn इज इक्वल टू 0. ठीक है, अगर f of x ऑड है, सपोज f of x ऑड है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a0 देन? What will be the value of a0 when f of x is odd? 0. Why it is 0? Because minus pi to plus pi of an odd function is equal to 0. ठीक है, तो जब f of x अगर odd है तो a0 0 हो जाता है. Similarly, an क्या होगा? f of x odd है, cos is an even function. f of x odd है, cos is an even function. Odd into even is an odd function. तो फिर से माइनस पाई टू प्लस पाई ऑफ दिस ऑड फंक्शन विल बी अगेन इक्वल टू 0. ठीक है, नेक्स्ट हमें निकालना है bn. bn में क्या है? f of x is an odd function, sin is an odd function, product of two odd function is an even function. तो इसका आ जाएगा 2 by pi integral 0 to pi fx. तो अगर फंक्शन ऑड है तो हमें a0 0 लिखना है, an 0 लिखना है, और bn हमें खाली कैलकुलेट करना है. तो बहुत सारा हमारे स्टेप्स कम हो जाते हैं इफ यू चेक फॉर इवन एंड ऑड. और अगर नहीं चेक करना है तो हम तीनों का तीनों निकाल सकते हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट.
जैसा हमने 0 2 पाई में किया, यहाँ पे भी -पाई टू +पाई हम कर सकते हैं, लेकिन तीनों कोएफिशिएंट्स निकालने पड़ेंगे. बट इफ यू कैलकुलेट, इफ यू चेक वेदर द फंक्शन इज एन इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, सो मेनी स्टेप्स आर रिड्यूस्ड. क्योंकि अगर ऑड है तो हमें a0 निकालने की जरूरत नहीं है, an निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों ही 0 हो जाता है, तो खाली हमें bn निकालना है. Okay, that is the advantage when you check for even and odd function when the function is defined in -pi to +pi. That is very important. अगर हमारा फंक्शन दिया है f of x equal to x square in 0 to 2 pi, then we, even though x square is an even function, but that we cannot say. अगर -pi to +pi में defined है तो ही हम चेक कर सकते हैं कि even है या odd है. Don't check the function when the function is defined in 0 to 2 pi. ये ध्यान देना है कि अगर -पाई, क्यों हम लोग कर, अदरवाइज वी कैन नॉट अप्लाई दिस प्रॉपर्टी. इफ यू आर नॉट चेकिंग फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन, कैलकुलेट ऑल द 3 Fourier कोएफिशिएंट्स एंड राइट द Fourier सीरीज, नथिंग रॉन्ग इन दैट. लेकिन अगर चेक करेंगे तो हमारे कोएफिशिएंट्स थोड़े से कम हो जाते हैं. तो वी हैव व्हेन f of x is odd, a0 0, an 0 and bn is equal to this. ठीक है, तो अभी यू विल बी गिवन अ फंक्शन. अगर वो फंक्शन ऑड है तो हमें खाली bn निकालना है, a0 और an 0 हो जाएगा. अगर वो फंक्शन इवन है तो हमें a0 और an निकालना है, bn विल बी इक्वल टू 0. और अगर -पाई टू +पाई है तो वो 2 टाइम्स 0 to पाई हो जाएगा फॉर्मूला में, उतना ही चेंज करना है. ठीक है, so this we are solving it when the function is defined in the interval -pi to +pi. तो ये जो दो है, ये f of x is even, f of x is odd, write these two properties. That part is very important. And what is an even function, what is an odd function? Even function में क्या होता है, x को -x पुट करते हैं, अगर सेम फंक्शन आ गया तो even, माइनस ऑफ दैट फंक्शन आया तो odd. So write down the important properties. अगर odd है तो हमें क्या निकालना है, even है तो हमें क्या निकालना है, and how to calculate whether the function is an even function or an odd function. So we'll take first problem. Find the Fourier series for the function f of x equal to x cube in -pi to +pi. Find the Fourier series for f of x equal to x cube in -pi to +pi. सबसे पहले हमें चेक करना है कौन सा इंटरवल दिया है. -पाई टू +पाई दिया है तो हम इवन और ऑड चेक कर सकते हैं. अगर यहाँ पे 0 to 2 पाई दिया है तो हम नहीं हमें चेक नहीं करना है. ओके, ओनली इफ द फंक्शन इज डिफाइंड इन -पाई टू +पाई, चेक फॉर इवन और ऑड फंक्शन. सो f of x equal to x cube, what type of function is that? अगर हम x को -x पुट करेंगे पूरे फंक्शन में तो आंसर सेम आता है या माइनस ऑफ दैट आंसर आता है? जस्ट चेक, बताओ मुझे कौन सा फंक्शन है. f of x equal to x cube, ऑड फंक्शन, करेक्ट. ओके, कैसे किया ऑड फंक्शन? हमने x को -x पुट किया तो ये हो जाता है -x the whole cube. -x the whole cube होता है -x cube, which is -f of x. मतलब f of -x is -f of x. f of x हमारा x cube है, लेकिन हमारा आंसर आ रहा है -x cube, मतलब -f of x. So which means that f of x equal to x cube is an odd function. और अगर odd function है तो a0 0 है, an 0 है. Okay, if it is an odd function then a0 is 0, an is 0. हमें ये दो कोएफिशिएंट्स निकालने की जरूरत नहीं है ना, कैलकुलेट ओनली bn. तो हमें खाली अभी bn निकालना है. ठीक है, सिंस द फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, वी आर कैलकुलेटिंग only bn, since for the odd function a0 and an are 0. कैलकुलेट करेंगे तो भी आंसर 0 ही आएगा, तो वी नीड नॉट वेस्ट आवर टाइम इन कैलकुलेटिंग द फंक्शन. ठीक है, तो अभी bn निकालना है. Since f of x, just remember this, when the interval is given as -pi to +pi, then only check for even and odd. Okay, if it is defined in -pi to +pi, तभी check करना है, not for 0 to 2 pi. Okay, तो bn निकालते हैं. ये जनरल फॉर्मूला है bn का.
if you don't remember this, we can write, we have to write only this formula actually. Minus pi to plus pi हो जाता है 2 times 0 to pi fx into sin nx. Can we use this method? No, we cannot use this method because there the interval was 0 to 2 pi. So in 0 to 2 pi, we cannot check for even and odd. It has to be defined because the curve is symmetric about the y-axis, or it has to be on both the sides. इसीलिए minus pi to plus pi में ही हमको check करना है कि even है odd है, and this method is applied only for minus pi to plus pi, not for 0 to 2 pi. Okay, Uttara? So we have to apply this method only when the function is defined in minus pi to plus pi, not for 0 to 2 pi. बहुत method, बहुत mistakes होते हैं बच्चों के. They don't see the interval, they see the function and think that it is an even function. So calculate only a0 and an. ऐसा नहीं है. इंटरवल चेक करना है, अगर माइनस पाई टू प्लस पाई है तो ही हमें इवन और चेक करना है, नहीं तो चेक नहीं करना है हमको. So now we are calculating bn because a0, an are 0, and since the function is an odd function. Substituting for the function, f of x is equal to x cube. Okay, कैसे इंटीग्रेट करना है इसको? How do we integrate this? X cube into sin nx. कैसे इंटीग्रेट करना है इसको? U into v. And we can apply the generalized rule. तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं? अगर हमें uv अप्लाई करना है तो what is the first step we write? हमको लिखना होता है u integral v. Okay, yes, अनुराग, you are right. x cube को हमें u लेना है, sin nx को हमें v लेना है. Correct. x cube को हमें u लेना है, sin nx को हमें v लेना है. ठीक है. उसके बाद फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है? u इंटेग्रल v. uv का जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का पहला स्टेप है u इंटेग्रल v. तो सबसे पहले हमें u इंटेग्रल v लिखना है, मतलब एक ब्रैकेट में u लिखना है, दूसरे ब्रैकेट में इसका इंटीग्रेशन लिखना है. ठीक है. सो इन द नेक्स्ट स्टेप पहले ब्रैकेट में u लिखना है, नेक्स्ट ब्रैकेट में sin nx का इंटीग्रेशन विच इज माइनस cos nx by n. सेकेंड टर्म इज माइनस. पहला टर्म पॉजिटिव है, सेकेंड नेगेटिव है, थर्ड पॉजिटिव, माइनस, ऑल्टरनेट प्लस एंड माइनस होते हैं. तो पहले हमने u को लिखा, फिर इंटीग्रल v को लिखा. अभी जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसको बार बार डिफरेंशिएट करते जाना है. पहला x क्यूब है, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x, 6x का डेरिवेटिव 6, एंड 6 का डेरिवेटिव 0 होता है, इसके लिए वी आर नॉट राइटिंग द नेक्स्ट टर्म. उसके बाद इसका हमें इंटीग्रल v लिखना है. पहले इंटीग्रल v को फिर से इंटीग्रेट करना है. फर्स्ट ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करते जाना है और सेकेंड ब्रैकेट को इंटीग्रेट करते जाना है. तो यहाँ पे पहला टर्म है माइनस cos nx by n. इसका इंटीग्रेशन माइनस cos nx का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस sin nx अपॉन n स्क्वायर. इसका फिर से इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखना है. तो माइनस sin nx का इंटीग्रेशन cos nx अपॉन n क्यूब, फिर से इसका इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n रेज टू 4. ओके. तो हमें दो ब्रैकेट्स में लिखना है. पहले ब्रैकेट में u लिखना है, सेकेंड ब्रैकेट में इंटीग्रल v लिखना है, और फिर पहले ब्रैकेट को हमें डिफरेंशिएट करते जाना है. x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का 6x और 6x का 6. सेकेंड जो ब्रैकेट है उसको हमें इंटीग्रेट करते जाना है. So minus cos nx by n का integration is minus sin nx upon n square. Then इसका integration till the derivative becomes 0. Continue this. And in between you have plus and minus. पहला term positive, second term negative, third term positive, fourth term negative. ठीक है. Understood how to write this u into v? Generalized rule. पहले तो always I'm telling you, always write the answer in bracket. मतलब u इसको हमेशा bracket में करके simplify करो. नेक्स्ट स्टेप यू कैन सिंप्लीफाई, बट डोंट ट्राई टू सिंप्लीफाई ये माइनस इंटू माइनस प्लस वगैरह करके मत करो. राइट एवरीथिंग इन ब्रैकेट, गो ऑन राइटिंग द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट टर्म एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड ब्रैकेट टर्म. ओके. नाउ अप्लाई करना है x को पाई और x को 0. अगर x को 0 पुट किया तो वैल्यू क्या आती है? हर एक टर्म में अगर x को 0 पुट कर दिया तो ये पहला टर्म x है, 0 हो जाएगा.
यहाँ पे भी x है 0, यहाँ पे भी x है 0, यहाँ पे साइन 0 इज अगेन 0, सो लोअर लिमिट इज 0. ठीक है. अपर लिमिट में हमें क्या करना है, x को पाई पुट करना है. जब x को पाई पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos n पाई sin n पाई cos n पाई sin n पाई. अगेन वी नो दैट sin n पाई इज ऑल्सो इक्वल टू 0. ठीक है. तो हमारा खाली cos n पाई में आंसर बचेगा. राइट. When I put the upper limit, sin n pi is also equal to 0. Cos n pi only will remain. Lower limit is already 0. Upper limit may be, when I replace x by pi, these two terms also will become 0. So next step में, so I am substituting x के बदले pi. So pi cube minus cos n pi by n minus 3 pi square minus sin n pi by n square 6 pi cos n pi by n cube minus this. Now apply the simplify. sin n pi को हम लोग 0 पुट करेंगे. Sin n pi will become 0. So we will have the terms as pi cube minus cos n pi by n 6 pi into cos n pi by n cube. ठीक है. तो अभी कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पे. I think we can cancel 1 pi also. We can take cos n pi common. तो I've written this term first. तो अगर 2 by pi को अंदर ले लिया तो ये हो जाएगा 12 into cos n pi by n cube. और ये 2 by pi यहाँ पे ले लिया तो ये माइनस साइन हो जाएगा 2 pi square into cos n pi by n. फिर से cos n pi is common. The value of cos n pi is minus 1 raised to n. तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos n pi को अगर कॉमन ले लिया तो 12 by n cube minus 2 pi square by n. Most of the problems we are applying u into v only. In few cases you have trigonometric function or e raised to ax into cos etc. But otherwise normally we are applying u into v only. Is it okay? Minus 1 raised to n, 12 by n cube minus 2 pi square by n. This is the value of bn. So a0 is 0, an is 0 and bn is equal to minus 1 raised to n, 12 by n cube minus 2 pi square by n. Substituting in the Fourier series. This is bn, substituting in the Fourier series. Now why I have written only bn? Because a0 is 0, an is 0, so we will have only bn sin nx. Normally हमारा Fourier series क्या होता है? a0 by 2 plus summation an cos nx plus bn sin nx. Now since f of x is an odd function, a0 an are 0, so we will have only summation bn sin nx. खाली substitute करना है उसको. f of x के बदले x क्यूब और bn के बदले minus 1 raised to n, 12 by n cube minus 2 pi square by n into sin nx. ठीक है. Again I am repeating, even or odd कब चेक करना है? जब the interval is minus pi to plus pi, not for 0 to 2 pi. जो हमने कल और परसों किए थे वहां पे 0 to 2 pi था, तो वहां पे हमको चेक नहीं करना है. खाली अगर माइनस पाई टू प्लस पाई इंटरवल दिया है तो ही हमको चेक करना है. Any doubt in this? Slide number 16. थ्री स्टेप्स अगेन, लास्ट थ्री. कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे. लास्ट थ्री मतलब ये साइन एन पाई 0 हो गए तो ये खाली टर्म्स बचे. उसमें ये वाला टर्म मैंने 2 बाई पाई को अंदर लिया.
2/π को अंदर लिया तो ये क्या हो जाता है 2/π इंटू पाई स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 2π², वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर 2/π को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 12π/π विच इज इक्वल टू 12। और कुछ नहीं किया, मैंने खाली ब्रैकेट ओपन किया है और ये वाले टर्म को पहला लिखा है, इसको मैंने सेकेंड लिखा है, और कुछ नहीं किया। 2/π is common to both the terms, so I have taken 2/π inside the bracket and written the second term first and first term second, और कुछ नहीं किया। ओके यश, सेम फॉर्म में लिखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव जस्ट रिटन, पहला पॉजिटिव रखने के लिए मैंने ये टर्म पहला लिखा है और कुछ नहीं है। Second example. Find the Fourier series for f of x is equal to mod sin x in -π to +π. तीन चीजें चेक करनी है। पहले देखो फोरियर सीरीज दिया है कि नहीं। अगर फोरियर सीरीज है तो उसके बाद हमें इंटरवल चेक करना है। इंटरवल चेक करने के बाद फंक्शन पे जाना है। तो पहला फोरियर सीरीज है, मतलब हमको a0 an और bn चाहिए फोरियर सीरीज निकालना है। तो अभी हमें इंटरवल देखना है -π to +π। अगर -π to +π है तो वी कैन थिंक ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। तो mod sin x, व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज mod sin x? इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? एनीबडी? mod x इवन फंक्शन, करेक्ट, इवन है, क्योंकि हम अगर x को -x भी पुट करेंगे तो मॉड के अंदर है तो आंसर सेम ही आने वाला है ना। जो हम अगर x को -x पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा mod of -sin x, and mod of -sin x is same as mod sin x, क्योंकि mod of -1 is 1 only. It's an even function. तो it is an even function. तो अगर even function है तो हमें क्या निकालना है? What is 0 first? अगर even function है तो which term is 0? Okay, a0 और an निकालना है and bn is equal to 0. Correct. तो if it is an even function, bn will become 0. हमें खाली a0 और an निकालना है। ठीक है, तो अभी हमें a0 का फॉर्मूला लिखना है, उसमें वो डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी यूज करना है। सिमिलरली an निकालना है और दोनों वैल्यू हमें समेशन दैट इज fx में सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, so when the function is an even function, mod है करके it is an even function. Sin x is not an even function, but since we have mod of sin x, it becomes an even function. Okay, now okay, one more thing. Now what is the value of mod sin x when x takes positive values? अगर x पॉजिटिव है तो mod sin x की वैल्यू क्या, mod sin x का क्या हो जाएगा? What will happen to mod sin x when x is positive? Is it same as sin x only? अगर माइनस है तो हम लोग mod को यूज करते हैं ना। mod of -1 is 1, mod of +1 is also 1. तो अगर mod 1 है तो 1 ही आंसर आता है, mod of -1 है तो 1 आंसर आता है। मतलब mod sin x, अगर x पॉजिटिव है तो इट इज गोइंग टू बी sin x ओनली। ठीक है, तो फंक्शन अगर हमें x पॉजिटिव साइड में लेना है तो fx की वैल्यू sin x हो जाएगी। 0 to π में द फंक्शन विल बिकम sin x, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है a0 का, दैट इज फ्रॉम 0 to π। a0 is 2/π इंटीग्रल 0 to π। 0 to π का मतलब होता है कि पॉजिटिव साइड, -π to 0 मतलब नेगेटिव साइड है ना। अगर हम लोग नंबर लाइन लेंगे तो -π से 0 मतलब नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x है, 0 to π मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x है। तो पॉजिटिव वैल्यू में mod sin x will become sin x ओनली। ठीक है, तो हमें f of x को sin x ही लेना है, नॉट mod sin x। अगर x पॉजिटिव है तो mod की वैल्यू वही फंक्शन हो जाती है, sin x। तो 0 to π में द फंक्शनल वैल्यू इज sin x।
माइनस पाई टू 0 में माइनस साइन एक्स हो जाता है. ओके, सो नाउ इसको इंटीग्रेट करो. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a0? साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है बिटवीन द लिमिट 0 एंड पाई. साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स. अप्लाई द अपर लिमिट, लोअर लिमिट. क्या आएगा आंसर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a0? 0? No, I don't think it is 0. 2 by pi. Okay, all different answers. और कौन-कौन से आंसर्स आ रहे हैं देखते हैं. साइन एक्स को हमें इंटीग्रेट करना है तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा 0 to पाई. फिर एक्स के बदले पाई, एक्स के बदले 0. 2 by pi. Any other answers? 0. Anybody else? Let's see what are the other answers. Darshana also 0. Anurag is 4 by pi. Okay. All different answers. और एक बार चेक करो सब लोग अपने अपने आंसर्स. एक बार और चेक करो, देखते क्या आता है. 4 by pi, फिर से 0. 4 by pi. Okay. क्या है इसका इंटीग्रेशन? साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस बिटवीन द लिमिट 0 एंड पाई. तो हमें x के बदले पाई पुट करना है, x के बदले 0 पुट करना है. ठीक है. सो व्हेन आई पुट x के बदले 0 पाई, आई विल गेट माइनस कॉस पाई. ओके, लोअर लिमिट का माइनस साइन और ये माइनस साइन मिला के यहाँ पे प्लस हो जाएगा. फिर x के बदले 0 पुट करना है तो cos 0 की वैल्यू 1. ठीक है. इज द स्टेप ओके? हम क्या कर रहे हैं, पहले साइन का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस कॉस एक्स, फिर एक्स के बदले पाई पुट कर रहे हैं. तो एक्स के बदले अगर पाई पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस पाई माइनस द लोअर लिमिट के लिए एक माइनस साइन, और ये फंक्शन के साथ ऑलरेडी एक माइनस साइन है तो ये प्लस हो जाएगा. cos 0 इज 1. नाउ वी नो cos पाई की वैल्यू क्या होती है. cos पाई की वैल्यू -1 है. cos पाई की वैल्यू -1, तो -1 into -1 that will become +1. तो 1 + 1 ये हो जाएगा 2. That is equal to 4 by pi. Yes. ठीक है. तो 0 कब आएगा? अगर ये पार्ट, अगर ये माइनस साइन का यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ किया होगा, इसके लिए 0 आ रहा है आंसर, है ना. Some of you have got 0. क्यों 0 आया? I think that माइनस साइन का कुछ तो मिस्टेक किया था. यहाँ पे 1 + 1 आ रहा था. I think you must have got -1 + 1 या 1 - 1 कुछ तो हुआ होगा, इसलिए 0 आंसर आया. Now clear? 4 by 5 is okay? ठीक है. अभी an निकालना है. Yes. एक दो स्टेप ज्यादा भी होंगे तो चलेगा, लेकिन डू इट सिस्टमैटिकली ताकि मिस्टेक्स नहीं होंगे. ठीक है. तो a0 is 4 by 5. अभी हमको an निकालना है. फिर से an is equal to 2 by pi integral 0 to pi fx cos nx dx. fx के बदले sin nx, sin x mod sin x की वैल्यू 0 to pi में sin x हो जाता है. वैसे अगर mod x दिया है तो x हो जाएगा उसका वैल्यू. नाउ क्या करना है इसके बाद? sin x cos nx. We have to integrate sin x cos nx. So can we integrate directly? क्या करेंगे अभी इसके बाद? कैसे इंटीग्रेशन करना है ये फंक्शन का? दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. We cannot apply u into v. u into v के तो अलग अलग फंक्शंस होने चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके इसको सेपरेट कर देंगे. So we will separate sin A cos B. तो मैं क्या करूंगी? ये 2 को भी इसके अंदर ले लेती हूँ. तो I can write 1 by pi 2 sin. This 2 I've taken it inside. 2 sin A cos B. So 2 sin A cos B will become, okay, 2 sin A cos B, sin A plus B plus sin A minus B. Okay? Sin A plus B plus sin A minus B. तो यहां पे इसके लिए हमें अप्लाई करना है. 2 इज ऑलरेडी देयर.
ए के बदले x है, b के बदले nx है। सो नाउ व्हाट विल बी a प्लस b, कैसे लिखेंगे इसको? तो यहाँ पे a के बदले x है, b के बदले nx है, तो a प्लस b हो जाएगा x प्लस nx। x प्लस nx में अगर x बाहर निकाला तो हो जाएगा 1 प्लस n इंटू एक्स। सिमिलरली साइन ऑफ 1 माइनस n इंटू एक्स dx। ठीक है, a x है, b nx है, तो a प्लस b हो जाएगा x प्लस nx। उसमें से मैंने x बाहर निकाला है और यहाँ पे भी x माइनस nx में से x बाहर निकाला है। क्यों x बाहर निकाला है पता है? बिकॉज वी वॉन्ट टू इंटीग्रेट दैट, ताकि जो कांस्टेंट टर्म है उससे हम डिवाइड कर सकते हैं। साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एम एक्स अपॉन एम, तो वो कांस्टेंट लाने के लिए हम लोग x को बाहर निकाल रहे हैं। ना इंटीग्रेट साइन 1 प्लस एन एक्स प्लस साइन 1 माइनस एन एक्स एंड देन अप्लाई द अपर लिमिट, लोअर लिमिट एंड सी व्हाट इज द आंसर फॉर ए। ठीक है, हमने ए एन का फॉर्मूला यूज किया है, एफ ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट किया है एंड देन 2 sin a cos b का फॉर्मूला हमने यूज किया है, तो वी गेट साइन ऑफ 1 प्लस एन एक्स प्लस साइन ऑफ 1 माइनस एन इंटू एक्स। इंटीग्रेट करो, अप्लाई द लिमिट एंड टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर, देन चेक ट्राई कर लो। आई विल डू दैट बिकॉज यहाँ पे n वाला पार्ट है, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो पहला टर्म था साइन 1 प्लस एन एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, सिमिलरली साइन ऑफ 1 माइनस एन ऑफ 1 माइनस एन इंटू एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस एन इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एन। इंटीग्रेशन हो गया। नाउ अप्लाई द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट। ओके, तो अपर लिमिट अप्लाई करने के पहले ये दोनों टर्म्स में माइनस साइन है, सो आई विल टेक दैट माइनस साइन कॉमन आउट। ठीक है, तो इसको लिख दूंगी मैं माइनस 1 बाई पाई कॉस ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस कॉस ऑफ 1 माइनस एन इंटू एक्स। नाउ अप्लाई द लिमिट एज एक्स इक्वल टू पाई। एक्स के बदले पाई पुट करना है और एक्स के बदले 0 पुट करना है। देयर इज नो साइन फंक्शन, ओनली कॉस फंक्शंस वी हैव, सो इट इज नॉट 0 एज सच। फिर क्या किया है, एक्स के बदले पाई पुट किया है और x के बदले 0 with a minus sign outside because we have a lower limit as x equal to 0, x equal to pi and x equal to 0. Okay. Now can you tell me what will be the value of cos of 1 plus n pi? Yesterday I showed you how to expand that and get the value of cos of 1 plus n into pi. Cos of a plus b का formula use करके we can expand cos of a plus b, cos of a minus b, and tell me what will be the value of cos 1 plus n into pi. Okay, I'll expand and show you. Cos of 1 plus n pi. So it is cos of a plus b. So cos a cos b minus sin a sin b. Minus 1 raised to n. Okay. Minus 1 second. Agar cos pi cos n pi minus sin pi sin n pi. We know sin pi is 0 or sin n pi is also 0. What about this? Cos pi की value होती है -1. Cos n pi is -1 raised to n. So I will take it as minus cos n pi. ठीक है, cos n pi की value है -1 raised to n. Now I'm not substituting now, keeping it as cos n pi. नहीं तो इसका आंसर एक्चुअली आएगा -1 raised to n plus 1. ऐसा हो जाएगा उसका. It is not -1 raised to n. Cos n pi is -1 raised to n. Cos of n plus 1 pi actually हो जाता है -1 raised to n plus 1. If you're confused, then you can open the bracket and write the correct answer from here. Similarly, what is cos of 1 minus n pi? वो भी सेम ही रहेगा because बीच में प्लस साइन आता है and sin this second part is equal to 0. तो दोनों का आंसर हो जाएगा minus cos n pi.
minus 1 raised to n is the value for cos n pi. तो यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस 1 raised to n लिख सकते हैं हम लोग उसको, या फिर डायरेक्टली ऑल्सो वी कैन राइट cos of n pi is minus 1 raised to n, so cos of n plus 1 pi will be minus 1 raised to 1 plus n, वो भी कर सकते हैं. Substitute in this step. This value is minus cos n pi. This is also minus cos n pi. ये आ जाता है हमारा. ठीक है. Now we have two terms with denominator 1 plus n and denominators 1 minus n. तो पहले 1 plus n वाले टर्म को हम कंबाइन करेंगे. सॉरी, तो पहले अगर 1 plus n वाले टर्म्स को कंबाइन किया तो वी विल गेट माइनस कॉस n पाई माइनस 1. यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस n पाई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n. कंबाइनिंग द टर्म्स with denominator 1 plus n and denominator 1 minus n. Now the numerator is common. We can take it out. Already there is a minus sign outside. When this term comes out, minus sign will get cancelled. Cos n pi plus 1 upon pi into 1 upon 1 plus n plus 1 upon 1 minus n. Take the LCM and simplify. LCM लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 1 minus n plus 1 plus n upon 1 minus n square. n and n will get cancelled. 2 upon 1 minus n square हो जाएगा. Now I am replacing cos n pi by, even if you don't replace it's okay, minus 1 raised to n plus 1 upon pi, या फिर इसको वैसे भी रखो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2 upon 1 minus n square. Now, is this an true for all the values of n? Is this an true for all the values of n? अगर हम n को 1 2 3 4 पुट करेंगे तो इंफिनिटी आता है कोई भी वैल्यू के लिए. कौन सी वैल्यू के इंफिनिटी हो जाता है ये फंक्शन? इट इज नॉट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. करेक्ट. अगर हम n को 1 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो पूरा टर्म इंफिनिटी. So this is an is true only for n not equal to 1. अगर n equal to 1 हमको अलग सा निकालना पड़ेगा. ओके. This an is true for n not equal to 1. मतलब a1 हमको अलग सा निकालना पड़ेगा. an when n is equal to 1 we have to calculate it separately. Okay, so after calculating an and bn, check whether it is true for all the values of n. n starts from 1 only, okay, not 0. तो अगर n को 1 पुट किया तो a1 निकालना है. a1 हो जाएगा 2 by pi इंटीग्रल 0 to pi sin x cos x dx. क्या डिफरेंस है? an में यहाँ पे n आता है, cos nx होता है. अगर an निकालना है तो a1 में हो जाता है cos x. इसको इंटीग्रेट करना है. फिर से कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग? cos x sin x cos x या 2 sin x cos x क्या हो जाता है? 2 sin x cos x sin 2x. करेक्ट. तो ये हो जाएगा 1 by pi इंटीग्रल 0 to pi sin 2x. इसको इंटीग्रेट करो. अप्लाई द अपर लिमिट लोअर लिमिट. नाउ टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a1. इंटीग्रेट sin 2x between the limit 0 and pi and tell me what will be the value of a1. Try करो ये वाला part. One by pi, okay. जीरो. ओके. और आंसर्स हैं देखते हैं. 1 by pi एक आंसर आया, 0 एक आंसर आया. व्हाट अबाउट अदर्स? साइन को इंटीग्रेट करना है, उसके बाद अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट.
What about others? Two answers I've got now, 1 by pi and 0. Zero. Tejas also says 0. Get 7, 0. Okay. Still, I've got two answers still now, 1 by pi and 0. Okay, how it is 0 and how it is 1 by pi, we'll just check. तो साइन को हमें इंटीग्रेट करना है, तो माइनस कॉस 2x अपॉन 2 बिटवीन द लिमिट 0 एंड पाई. तो 1 बाय पाई, तो हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे लिमिट कॉस माइनस कॉस 2 पाई, फिर कॉस 0 इज 1, लोअर लिमिट का माइनस साइन और इसका माइनस साइन होकर ये प्लस हो जाएगा. कॉस 2 पाई वैल्यू इज +1, cos 2 pi वैल्यू इज +1, तो ये हो जाएगा -1 + 1 = 0. लास्ट में हमने a0 निकाला था, वहां पे cos pi था, इसके लिए +1 हो गया था. यहाँ पे cos 2 pi है, तो इसलिए 1 हो जाता है, तो -1 + 1 = 0. Yes. So Anurag, you have got 1 by pi, which is not correct. I think 1 by pi you have got how 1 + 1 किया होगा, है ना. 2 by 2 pi किया होगा, इसके लिए 1 by pi आया. यहाँ पे -1 होगा बिकॉज cos 2 pi, cos ऑफ एन इवन मल्टीपल ऑफ pi इज 1, तो ये हो जाएगा -1 + 1 दैट इज इक्वल टू 0. सो a1 0 हो गया. सो व्हाट आर द थिंग्स वी गॉट? ओके, तो हमारा a0 क्या था, 4 by pi. an what we have got in the previous, this an is true only for n varying from 2 to infinity. Then we got a1 0, and bn is already 0 because it is an even function. It is an even function, bn is already equal to 0. Substituting all these things here, a0 है 4 by pi, तो 4 by 2 pi हो जाएगा. Now this an is true for n varying from 2 to infinity. तो उसमें अगर n को 1 पुट किया तो पहला टर्म आएगा a1 cos 6. But since a1 is equal to 0, I have not written that term. It starts from 2 to infinity, जो भी an का पार्ट है, into cos nx. bn is already equal to 0 because we have an even function. ठीक है? a1 is 0, substituting all these coefficients in the fx. So when the function is defined in -pi to +pi, it is better. लेकिन अगर -pi to +pi दिया है और अगर फंक्शन इवन भी नहीं है, ऑड भी नहीं है, तो तीनों के तीनों निकालने पड़ेंगे. ओके, ओनली इफ इट इज इवन एंड ऑड, देन वी कैन चेक फॉर, वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टीज कि bn 0 होगा या a0 0 होगा. लेकिन अगर वो फंक्शन इवन भी नहीं है, ऑड भी नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते. वी हैव टू कैलकुलेट ऑल द 3 कोएफिशिएंट्स. मुझे बताओ कौन से टाइप का फंक्शन है, इवन है या ऑड है या नाइदर इवन नॉर ऑड? e raised to ax minus e raised to minus ax upon e raised to a pi minus e raised to minus a pi. Even. Okay, let's check. What about others? X को -x पुट करना है. See what type of function you get. Ronak is saying it's even. Okay. What about others? Even. Okay. Odd. दो ही ऑप्शन है या फिर नाइदर इवन नॉर ऑड, 3 ऑप्शन है. ऑड. ओके, Madhusudan says it's odd. Uttar also odd. Okay. अगर हमने x को -x पुट किया तो क्या आएगा? e raised to, x को -x पुट करना है तो e raised to -ax माइनस e raised to ax, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो e raised to ax. ठीक है. नाउ दिस इज नॉट सेम एज दिस फंक्शन, ये दोनों सेम नहीं है. बट इफ आई टेक माइनस साइन कॉमन, देन इट बिकम्स सेम. So if I take minus sign common,
then it becomes e raised to ax minus e raised to minus ax upon the denominator. This part is anyway constant term. Okay, so it is not an even function, it is odd. When I replace x by minus x, both the numerators are not same. Denominator is same as it is a constant, but numerators are not same. But if I take minus sign outside from f of minus x function, then the numerator becomes the same. So we are getting f of minus x to be equal to f of x, which means that it is an odd function. Okay, so Ronak and Tejas understood how it is odd function. We have to replace x by minus x, and if I replace x by minus x, then we are not getting the same numerator. There is a sign change here. If we take minus sign outside, then it reduces to be f of x. So when it is an odd function, what happens? a0 an 0 हो जाता है, हमें खाली bn निकालना, ठीक है? When it is an odd function, we know that a0 is 0, an is 0, calculating only bn. तो bn में क्या करना है? This is a constant term, this can be taken out, खाली इसको integrate करना है, ये function को sign के साथ multiply करके integrate करना है. Okay? So be careful in calculating, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा भी change हो गया ना, even का odd हो गया तो क्या होता है? The constants are different. अगर हमने even ले लिया तो फिर bn 0 हो जाएगा. Everything will go wrong. So you have to be careful in calculating the even and odd function. Calculating bn. 2 by pi integral 0 to pi e raised to ax minus e raised to minus ax upon e raised to a pi minus e raised to minus a pi. Denominator is a constant, take it out. Don't bother. It looks a big function. Just take the denominator part common outside. तो खाली इसको integrate करना है हमको. इसको भी you can open the bracket. E raised to ax sin nx minus e raised to minus ax sin nx. I think we have used this formula many times. E raised to ax into sin bx. दोनों जगह वो formula use करना है और integrate करना है. ठीक है? E raised to ax sin bx का formula, we had used it many places. We are not applying u into v when we have these type of functions. We are applying directly the formula. Denominator part is a constant which can be taken common. Numerator को फिर मैंने bracket open किया है, so we will get two terms. We have this formula. So try to by heart this formula so that we can use it directly in integrating it. When you start solving by uv, it becomes again lengthy. So try to remember this formula. E raised to ax upon a square plus b square. अगर साइन है तो पहले साइन आता है और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस आ जाता है. बाकी सब सेम है. जो फंक्शन है साइन और कॉस का सेम टर्म्स है, खाली अगर साइन पूछा है तो साइन पहले आता है और उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस यहाँ पे आ जाता है. Substitute this formula in both the integrations. Calculate, apply the upper limit, lower limit, and calculate the value of bn. ठीक है? Try this, complete this. Substitute करना है. b के बदले यहाँ पे n है, यहाँ पे b के बदले n है, a के बदले a ही है. Apply the upper limit, lower limit, simplifying and writing the answer. ठीक है? Just simplify this. It's already 11 o'clock. Applying the upper limit, lower limit. You can go through this. खाली हमें simplify करना है. We know that cos n pi is minus 1 raised to n. Simplify करके उसका जो आंसर आएगा वहां पे substitute करना है f of x में, और कुछ नहीं करना है. These two terms, when n is x is equal, these two terms will get cancelled. Only this will remain. We can take n cos n pi, and then denominator is also common. Then we can
combine these two terms as f of, that is, this is same term. This will also get cancelled. We will get minus cos 2n cos n pi upon pi. Okay? Substituting everything. Is it true for all the values of n? What about this function? Is it true for all the values of n? Yes, yes, because n starts from 1 to infinity. This is not true. This is not defined for n equal to 0 में तो भी चलेगा. Only for 1 minus 1 upon a, कुछ तो n square is minus 1 upon. Okay, this is true for all the values of n. So we can just calculate and substitute the value in the bn formula. Okay. We'll continue this. Again, we have different types of problems when the function is defined in intervals, how to check for even and odd. We have different types of. We'll continue to learn. So thank you all. See you tomorrow. Yes, thank you so much.